Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class ninth, as you know, we are reading the last unit of this book, and today we will start our lesson from paragraph number 7. First, listen carefully. The following morning, I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. This, according to the terms of my miracle, is to be my third and last day of sight. She already has described her 2 days of sight. Now she is talking about the third day, the last day of her sight. She says the following morning, means following the second day. On the third day morning, I should greet the dawn. I should welcome the dawn, the morning. Anxious to discover, I would be worried to discover new delights, new pleasures, happiness, new types of happiness. For I am sure that for those who have eyes, इसलिए कि मुझे यकीन है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं which really see, जो वाकईन देखती हैं, which really see the depth of things, the for them the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. ऐसे लोगों के लिए हर दिन की सुबह जो है वो मुकम्मल तौर पे एक नया एक्सपोजर होती है, रेवलेशन होती है, एक नई दरियाफ्त होती है खूबसूरती की। मतलब जिनकी आंखें हैं और वाकई वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंखें देख सकती हैं चीज़ों को, तो उनके लिए हर सुबह एक नई खूबसूरती लेके आती है। This, according to the terms of my miracle, is to be my third and last day of sight. Okay, this will be, means this day will be the last and the third day of my sight, according to the terms of my miracle. Okay, उसने कहा है कि ये एक miracle होगा जो मुझे आंखें मिल जाएं 3 दिन के लिए। तो कहते हैं मेरी मिरेकल की इस्तिलाह में या वर्ड्स में जो मैंने मिरेकल कहा है, जो मुआजिज़ा कहा है कि 3 दिन मुझे आंखें मिलती हैं, उस इस्तिलाह के मुताबिक ये मेरे मुआजिज़े का तीसरा दिन होगा, that is the last and the third day of my sight. I shall have no time to waste in regret for longing. There is so much to see. The first day I devoted to my friends, animate and inanimate. The second revealed to me the history of man and nature. Today means third day, I shall spend in the workaday world of the present, amid the haunts of men going about the business of life. And where can one find so many activities and conditions of men as in New York? So the city becomes my destination. Now see this passage again and underline some difficult words. I shall have no time to waste in regret for longings. There is so much to see. The first day I devoted to my friends, animate and inanimate. The second revealed to me the history of man and nature. Today I shall spend in the workaday world of the present, amid the haunts of men going about the business of life. And where can one find so many activities and conditions of men as in New York? So the city becomes my destination. Right. Now she says, I shall have no time to waste. मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं वेस्ट करूं. This is my last day. किस चीज़ में वेस्ट करूं? In regret for longing, in sorrows for longing. अपनी ख्वाहिशात की मुकम्मल ना होने की जो सॉरोज़ हैं, जो सदमा है, जो दुख है, मैं उस दुख में वेस्ट नहीं करूँगी. But I should discover new things. There is so much to see. इसलिए कि मेरे पास बहुत कुछ देखने को अभी बाकी होगा. The first day I devoted to my friends,
animate and inanimate, animate, alive, living, inanimate, non-living और dead। जो भी मेरे फ्रेंड्स थे पहले दिन मैंने उनके साथ गुजारा, उनके साथ डिवोट किया, उसको वक्फ कर दिया। The second day revealed to me the history of man and nature। दूसरे दिन इंसानों की जो हिस्ट्री है, तारीख और नेचर की, वो मेरे सामने थी। Today, third day, I shall spend in the workaday world of present। आज का दिन, तीसरे दिन मैं गुजारूंगी workaday mean busy, world of the present, amid the haunts, among the haunts gathering place, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों का हजूम होता है, of men going about the business of life, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी का बिजनेस चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उन जगहों में जाऊंगा जहाँ लोगों का इकट्ठ होता है, गैदरिंग होती है। And where can one find so many activities and conditions of men as in New York? और न्यूयॉर्क के अलावा इस तरह की एक्टिविटीज़ इंसान और कहाँ पा सकता है? मतलब मैं जो कह रही हूँ कि लोगों के दरमियान रहूँगी, उनका ज़िंदगी के तौर तरीके देखूँगी और बिज़ी लाइफ को देखूँगी, तो ऐसी लाइफ और ऐसी कंडीशंस न्यूयॉर्क के अलावा और कहाँ दस्तयाब है? Because she herself was from New York, America. That is why she is talking about New York. That is very populated city और स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसलिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं होगी कि जहाँ पे लोगों को मैं देख सकूँ। So the city becomes my destination. So the New York City will become for the destination for my goal and aim to see the things, to see the people, to see the business of life of the people for my third day. Paragraph number 9. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. I asked her what she had observed. Nothing in particular, she replied. I might have been incredulous had I not been accustomed to such responses, for long ago I became convinced that the seeing see little. Now and then. Now and then means sometimes, kabhi kabar, rarely, kabhi kabar, seldom. I have tested my seeing friends. I have examined, I have tested, observed my seeing friends, the friends who can see. मैंने उनका टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया है, to discover what they see, ये जानने के लिए कि वो क्या देखते हैं। Recently, I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in woods, in jungle, woods, forest. फॉरेस्ट से वॉक करके एक दोस्त मेरे पास आई, मेरा विजिट किया उसने। I asked her what she had observed, what she had seen in the woods while she was walking. Nothing in particular, she replied. She replied, nothing in particular. Particular means special. कोई खास चीज़ नहीं देखी। I might have been incredulous, doubtful. मुझे शक सा गुजरा। Had I not been accustomed to such responses. शायद मैं इस तरह के जवाब के लिए accustomed नहीं थी, used to नहीं, मेरी आदत नहीं है कि इस तरह का जवाब आगे से मिलता। मैं सोच रही थी कि शायद वो कुछ एक्सप्लेन करेगी जो चीज़ उसने देखी है, but I was incredulous. Okay. For long ago, I became convinced. For long ago, बहुत पहले, I became convinced, inclined, tended. मैं इस बात की कैल हो चुकी हूँ, मैं इस बात को तस्लीम कर चुकी हूँ, that the seeing see little, कि जो लोग देखते हैं, the people who have eyes, जिन लोगों की आँखें होती हैं, वो बहुत कम देखते हैं, वो बारीक बीनी से नहीं देख पाते चीज़ों को। Okay, now see the next passage, number 10. How was it possible, I asked myself, to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note? I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch,
I feel the delicate symmetry of a leaf. I pause my hands lovely on the smooth skin of a silver birch, on the rough shaggy bark of a pine. In spring I touch the branches of trees hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter's sleep. I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolutions, and something of miracle of nature is revealed to me. Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. I am delighted to have the cool water of a brook rush through my open fingers. To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. To me, the pageant of seasons is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. This is a lengthy passage. Now see the explanation. How was it possible? I asked myself, ये कैसे मुमकिन था, क्या मुमकिन था? To walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note. यानी कि काबिल ज़िक्र और काबिल नोट कोई चीज़ एडमायरेबल वर्दी कोई चीज़ भी नहीं थी कि 1 घंटे के बाद भी जिसको देखा जा सके, 1 घंटे की वॉक करने के बावजूद इंसान कुछ ना देख सके. I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. मैं खुद, I am blind, I cannot see, but I can find hundreds of things to interest me. मेरे अपनी इंटरेस्ट की जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, इंटरेस्ट मेरे पैदा करती हैं, मैं वो चीज़ें देख सकती हूँ. थ्रू मेयर टच, फ़कत मैं टच करने के ज़रिए से ही अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों को देख लेती हूँ. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ. Okay, with the help of touch, I can feel the delicate, mulayim, symmetry, balance, order of leaf. एक पत्ते का जो बैलेंस बना हुआ है कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ताला ने बनाया है, तो उसकी मैं नरमी को देख सकती हूँ टच के ज़रिए. I pass my hands lovingly on the smooth skin of silver birch. और मैं प्यार के साथ डेलिकेट स्मूथ स्किन जो होती है सिल्वर बर्च की, सिल्वर बर्च इज़ अ टाइप ऑफ ट्री, ओके, विद स्मूथ ब्रांचेस, जिसको हम स्नोबर कहते हैं. स्नोबर का दरख्त बर्च कहा जाता है उसको. तो बर्च के जो स्किन है, जो उसका बॉडी है, उसकी मैं स्मूथनेस को फील करती हूँ. और द रफ शैगी बॉग ऑफ अ पाइनएप्पल के जो शैगी बॉग है, बॉग इज कवर ऑफ ट्री, जो तन्ने के ऊपर छाल होती है, दरख्त की जो छाल होती है, बॉग कहा जाता है, कवरिंग ऑफ ट्री. उसकी मैं शैगी स्किन जो है, हेयरी, शैगी में हेयरी, बालों वाली, अनइवन रफ स्किन को भी मैं फील कर लेती हूँ. इन स्प्रिंग, season of spring, I touch the branches of trees hopefully in search of a bird. कि शायद उस पर कोई नई कली, नया जो है बर्ड हो सकता है, वो कोंपल खिल रही हो, उसकी सर्च में मैं मुख्तलिफ स्प्रिंग के मौसम में पौधों को टच करती रहती हूँ. ओके, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, बर्ड इज़ द फर्स्ट साइन, ये पहली अलामत होती है ऑफ अवेकनिंग नेचर, कि नेचर बेदार हो रही है आफ्टर हर विंटर स्लीप, अपनी सर्दियों की स्लीप के बाद. सर्दियों के बाद चूँकि पौधे खिलना शुरू हो जाता है, उन पे बर्ड्स आते हैं, उन पे नए नए शगुफ़े आना शुरू हो जाते हैं, पैदा होना शुरू हो जाते हैं. दैट्स व्हाई शी इज़ सेइंग कि मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि दैट द नेचर इज़ अवेकनिंग आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप ऑफ विंटर. I feel the delightful velvety texture of a flower. Okay, I feel the delightful. मैं खुशगवार
velvety, smooth, नरम, मुलायम, velvet. टेक्सचर सरफेस, सतह जो होती है या टच ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर की जो ऊपर वाली सतह है या फ्लावर की जो सरफेस है उसके वेलवेटी जो टेक्सचर है या टच है उसको मैं फील करती हूँ और खुश होती हूँ। एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कन्वोल्यूशंस, और उस फूल की जो ट्विस्टिंग है उसके अंदर जो ट्विस्ट है या जो जिस तरीके से वो बना हुआ है फूल, मैं उसको डिस्कवर करती हूँ। एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज रिवील्ड टू मी, और इस तरीके से जो कुदरत फितरत की एक मौजज़ा है उसमें से कुछ न कुछ मुझे सबक मिल जाता है। Occasionally, sometimes if I am fortunate, I am lucky, I place my hand gently on a small tree. मैं एक छोटे से दरख्त पे अपना हाथ रखती हूँ आराम से, एंड फील द हैप्पी क्वेवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, और मैं देखती हूँ कि वो दरख्त जो है वो दैट इज क्विवरिंग मीन्स शेकिंग, वो कांप रहा होता है, उसमें जुम्बश होती है, वाइब्रेशन होती है, किस चीज़ की, ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, इसलिए कि उसके ऊपर एक तरफ परिंदा बैठा होता है और वो सॉन्ग, वो नगमा गा रहा है या सॉन्ग गा रहा होता है, और उसके सॉन्ग गाने की वजह से मैं उस दरख्त में जो जुम्बश पैदा हो रही है, जो वाइब्रेशन है, क्विवर है, उसको भी फील करके मैं हैप्पीनेस महसूस करती हूँ। I am delighted, I am happy to have the cool waters of a brook. Brook means stream, नदी का ठंडा पानी जहाँ पे मिल जाए तो मैं खुश होती हूँ। और जब वो ठंडा पानी rush through my open fingers. I put my fingers on in the flowing brook or water, and that water runs through my open fingers, और ये मेरे लिए खुशी का बहस होता है। To me, a lush carpet of pine needles, okay, pine की जो branches होती हैं, needles सी होती हैं, वो green color की, okay, that is like a lush carpet, a green carpet, or spongy grass. Spongy mean elastic, नर्म, smooth. Grass is more welcome, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं उसको खुश आमदीद कहता हूँ, किसकी निस्बत, दैन द मोस्ट लग्जूरियस पर्शियन रग, पर्शियन ईरानी जो कालीन होते हैं, कंफर्टेबल लग्जूरियस, उन कालीनों की निस्बत में ज़्यादा वेलकम करती हूँ उस ग्रीन कारपेट को जो पाइन नीडल्स के साथ बना हो, या स्पॉन्जी ग्रास, नरम मुलायम ग्रास के साथ जो बना होता है, उस पर बैठना मुझे ज़्यादा पसंद है दैन द मोस्ट लग्जूरियस पर्शियन रग कारपेट को कहा जाता है। पर्शियन रग चूँकि शुरू से मशहूर हैं, ईरानी कारपेट। To me, the pageant of season is a thrilling and unending drama. For me, the pageant, the view of seasons, is unending and thrilling drama. Okay, thrilling, exciting, unending drama, ना खत्म होने वाला, इसलिए कि एक सीज़न आता है दूसरा शुरू हो जाता है, वो ख़त्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है, इस तरीके से स्प्रिंग, विंटर, ऑटम वगैरह एक अनएंडिंग ड्रामा है, ये मुसलसल पूरा साल चलते रहते हैं। The action of which streams through my fingertips, और मैं फिंगर टिप्स पे इन मौसमों के आने जाने को गिनती रहती हूँ। Streams mean flows through my fingertips, उंगलियों के पोरों पे मैं इनको काउंट कर लेती हूँ। Last paragraph. If I were the president of a university, I would set up a course called How to Use Your Eyes. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. Right. If I were the president of a university, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, I would establish a course called How to Use Your Eyes. तो मैं एक ऐसा कोर्स establish करती, सेट करती, जिसका टॉपिक होता है How to Use Your Eyes, कि अपनी आँखों को कैसे इस्तेमाल करें। The professor who would be teaching this course would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing
what passes unnoticed before them. प्रोफेसर उनको बताता अपने शागिर्दों को कि कैसे वो ऐड कर सकते हैं खुशी को अपनी ज़िंदगियों में by really seeing, हकीकी तौर पे देख कर वो चीज़ें कि जिनके पास से वो बगैर देखे गुजर जाते हैं, unnoticed, unseen. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. वो प्रोफेसर कोशिश करता कि अपने स्टूडेंट्स की सोई हुई dormant सोई हुई asleep inactive and sluggish faculties और उसकी जो sluggish lethargic inactive जो जामिद हो चुकी हैं जो एक्टिव नहीं है ऐसी सलाहियतों को फैकल्टीज एबिलिटीज़ को अवेक करता उनको जगाता बेदार करता. Okay, here is the end of this chapter. Now come to homework. Here is the homework of Unit 12, Part 2. First one is write the meanings and make sentences of these words. And second exercise is answer the following questions. How will she spend D, the third day of her sight? Why has she no time to waste in longing? People who are deprived of sight are not devoid of imagination. Explain in your own words. To me, the pageant of season is an unending drama. Explain this sentence. And the third exercise is write the summary of today's lesson. In this way, you will be able to complete the summary of whole lesson.